Welcome, friend. Today we'll see address resolution protocol means ARP. Now, here, anytime a node has an IP datagram to send to another node in link, it has the IP address of the receiving node. It means what? Whenever systems which are connected into internet or network, that system always have an IP address, sender machine also receiver machine. Whenever some machine or sender machine want to send a data to another machine, then the data exactly arrived that destination machine with the help of IP address of destination machine. But here the one new thing which come up in this lecture, that is what? MAC. It means what? MAC address, media access control. Okay, this is new thing which come in this lecture. The source host knows the IP address of the next router by using it forwarding table. The last router knows the IP address of the destination host. However, the IP address of the next node is not helpful in moving a frame through a link. We need the link layer address of the next node, that is called MAC address. This is the time when the address resolution protocol becomes helpful. Means when the individual IP addresses of the systems are not able to communicate between each other or not able to deliver frame to the destination device, that is the time when ARP means address resolution protocol help us to deliver our frame to the destination device. Okay, now here ARP accepts an IP address from the IP protocol, it means internet protocol, maps the address to the corresponding link layer address and passes it to the data link layer. Now, one thing is also important here regard to MAC address. MAC address is nothing but a physical address. Physical address. We know IP address means what? Logical address. IP address means what? Logical address. And here MAC means what? Media access control. That is what? Yes, physical address. Okay, so here simply we have a diagram here. In this diagram, suppose this is system A and here is the system B. The cross mark in a circle, that is called router. Okay, whenever you see this kind of cross mark and around its circle, so it means always a router in networking. Okay, so this is also router, and now here this is switch. Okay, so this is system A and this is the first router. Here the switch which help to connect the systems. Now here this is system B, means whatever, this is sender and this is a receiver. Okay, or sometime this is called source and this is called destination also. Okay, now here this is last router. So if you remember, then we have a theoretical reference here, that is what?
So yes, the source the source host knows the IP address of the next router by using its forwarding table. The last router knows the IP address of the destination host. Okay, so here this is our source host and this is receiver host or destination host. Okay, so this machine connected with this router, it means what? First router knows the IP address of this one, and here n1 representing the IP address of system A, and here n2 representing the IP address of system 2 B. n1 IP address of A, n2 is the IP address of B. Okay, I will tell you later L1 and L2 means what. So first of all we finish it. So here this first router knows the IP address of A, and here the last router knows the IP address of the receiver host or destination host. Okay, means until we know the IP address of the connected device, that device which not allowed to transfer a data through the router. It means what? Every device should be connected to the router after knowing the IP address of that device to the router. It means what? हर बार जब कभी भी कोई सिस्टम नेटवर्क से जुड़ता है तो उस सिस्टम का आईपी एड्रेस फर्स्ट ऑफ ऑल उसके राउटर को पता होना चाहिए, तब ही वो सिस्टम उस नेटवर्क में ऐड हो सकता है. ओके, अदरवाइज नहीं. अब यहाँ पे होता क्या है, ARP का जो एग्जैक्टली वर्क कैसा है मैं आपको बताता हूँ. N1 N2 इन दोनों के आईपी एड्रेस है. अब अगर इफ इन केस, हमने अभी पढ़ा थोड़ी देर पहले, इफ the IP addresses are not able to deliver the data from A to B, now it's time to take a help from ARP, Address Resolution Protocol. अब होगा क्या, IP एड्रेस काम नहीं करेगा तो ये एक रिक्वेस्ट भेजेगा, सिस्टम ए एक रिक्वेस्ट भेजेगा इसे. ओके, अब रिक्वेस्ट भेजने के लिए वो IP एड्रेस का यूज़ कर लेगा. वे रिक्वेस्ट भेजते वक्त ये आईपी एड्रेस का यूज़ करेगा. रिक्वेस्ट रिसीव करने के बाद सेम सिनारियो अगर देखा जाए तो ये हो गया सिस्टम ए which is connected with the router, and this router connected with the switch. Again this is system B, and which is also connected with the another router. Okay, so here system B, this is switch, this is R1, this is R2. Okay, after that receiving the request from A, B respond to the its request. ये रिक्वेस्ट था, ये उसका रिस्पॉन्ड हो गया. आफ्टर दैट रिसीविंग द रिस्पॉन्ड फ्रॉम द बी, इन दैट रिस्पॉन्ड बी इंक्लूड इट्स MAC address and send to the sender. So after that receiving the respond plus MAC address, then system A is allowed to send all frames to the B. Okay, is it clear? अब आप लोगों को क्वेश्चन हो ये आपके सामने आया होगा कि जब रिक्वेस्ट आईपी के थ्रू भेज सकता है तो डेटा क्यों नहीं. ओके, अभी यहाँ तक तो ठीक है, दो ही सिस्टम है तब तो कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं. अगर यहाँ पे कोई और दूसरा राउटर हो, यहाँ पे कोई तीसरा राउटर हो और उनके अलग अलग सिस्टम्स हो, तो अगर ये आईपी एड्रेस के थ्रू भेजा जाए तो उस वक्त होगा क्या, ये आईपी एड्रेस तो उसे रिसीव नहीं कर पाएंगे. ओके, लेकिन ये रिक्वेस्ट जो है ये रिक्वेस्ट थ्रू द राउटर जाएगा. तो थ्रू द राउटर जाने के बाद ये जो इंटरमीडिएट राउटर्स है ये वहाँ पर इंटरसेक्ट हो जाएगा, और ड्यू टू द इंटरसेक्शन वो लंबा वक्त लग जाएगा, उससे देर लग जाएगी. तो यहाँ पे हमें क्या चाहिए, लॉजिकल एड्रेस तो हमारे पास है ही, हमें चाहिए डेस्टिनेशन डिवाइस का फिजिकल एड्रेस. ओके, तो सिंपल से उसे रिक्वेस्ट भेज दिया, उसने रिस्पॉन्ड में हमें क्या दिया, रिस्पॉन्ड प्लस उसका लॉजिकल फिजिकल एड्रेस विच हेल्प अस टू डायरेक्टली डिलीवर आवर डेटा टू द एग्जैक्ट डिवाइस.
ओके, अब जैसे कि हमें कहीं का पता बताया गया हो, हाउस नंबर, ब्लॉक नंबर और चॉल नंबर वॉट एवर। अब अगर हमें हाउस नंबर, चॉल नंबर या वो जो भी है वो एग्जैक्टली न्यूमेरिकल्स में जो एड्रेस है वो अगर ढूंढने में परेशानी है तो हमें फिजिकल लोकेशन एक आइडिया दिया जाता है कि भाई वहाँ पे एक मंदिर है, वहाँ पे एक बड़ी सी बिल्डिंग है, उसका कलर रेड है, येलो है, वॉट एवर। तो ये हो गया हमारे लिए उसका फिजिकल एड्रेस। ओके, सो वैसे ही यहाँ पर हम लोग ये जो मैक एड्रेस है वो फिजिकल एड्रेस यूज करेंगे एग्जैक्टली अवर डेटा डिलीवर टू द डेस्टिनेशन डिवाइस। ओके, सिंपल आपको एक याद रखना है यहाँ पे कि ARP इज नथिंग बट एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल। जब कभी भी IP डेटा डिलीवर करने में सक्षम नहीं है, मीन्स इंटरनेट प्रोटोकॉल इज नॉट एबल टू डिलीवर अवर डेटा to the destination device, on that time ARP help us to deliver our data with the help of physical address of that device. Clear? Okay, thank you for watching my video. Please like, share and subscribe my YouTube channel Dharaz Infotech, and please don't forget to press the notification bell icon for getting the notification of upcoming lecture. Thank you for watching. Bye bye.